Okay, Rudra, what are the factors that on which the resistance of a wire depends? Tell me. The material, the length. Material. Wait, first, material. Material means what? What can we call to material? What name can we give? Can we give to material? I Uh, don't think that you were in the last class, Rudra. Only Safia and uh, Roshni were there, because when I was studying these things, you were not there. Only two peoples were there, and Safia and Roshni. Okay, fine, it's okay. So tell me, what are the factors on which the resistance of a conductor depends? Area of cross section, Okay, area of cross section and length, length. and Okay, temperature. and temperature. Yes. So what is the relation between these three with the resistance? What is the relation between these three with the resistance? To this we denote it as a rho resistivity, right? Right? Resistivity ना, जितनी resistivity हर material की अलग अलग होती है resistivity. Every material is having different resistivity. Resistivity is a property of a material. Copper will be having different resistivity, and then aluminium will be having different resistivity, and silver will be having different resistivity. Less will be the resistivity, less will be the resistivity, less will be the resistance, right? And higher will be the resistivity, higher will be the resistance. Yes. So area of cross section we denote it as A, and to length we denote as small l, and temperature T, but it has no meaning in the relation. The R is equal to, how do you relate these three with the resistance? How do you relate? Formula, do you have remembered? Can you recall? No? Rudra, can you remember the formula? Ma'am, I don't. Yes? I don't remember. You don't have to remember. Just say it if you don't have remembered. Yes. It's rho, yeah, rho L by A. Okay. The relation for these three with the resistance of the wire is rho L by A. Okay. So rho is the, where rho is the resistivity and having the dimensional formula as ohm meter. Why ohm meter? Everyone is knowing, or have I to tell? Should I tell? Or everyone is knowing that why its dimensional formula is why is SI unit is ohm meter? Hello, Safia, Yes, are ma'am. you knowing or should I tell? Yes, I you don't know why it's SI unit is ohm meter. Okay, fine. तो चलो ये करते हैं हम लोग. R is equal to rho L by A है मेरे पास. ठीक है. Now what we have to do is we have to leave the rho alone. Okay, because we have to find out for rho, right? So we have to leave the rho alone in the RHS, and we can write it like RA by L. Can we write it or not? Yes or no? Can we write it or not? Write it, right? A will go to the numerator and L will get shifted to the denominator in the left hand side, right? And I have just reversed the left hand side and right hand side. Okay. So it doesn't matter. So rho is equal to RA by L. It means we can write their SI units. We can write their SI units, right? So what is the SI unit of R? Resistance. What is its SI ohm. unit? Ohm. What is the SI unit of A? Means area, meter square. And what is the SI unit of length? Meter. 1 meter will get cancelled by 1 meter. Yes or no? So what we are left with? We have left with the SI unit of resistivity as ohm meter. As ohm meter. Okay, that's why I said ki the SI unit of resistivity is ohm meter. Its unit is ohm. Its resistivity is ohm meter, length is meter, and area is meter square. Okay, ठीक है. ये सारे चीजों पे डिपेंड करता है. And also on the temperature, how it depends. I'm coming to your question, Safia. That is third, right? Is third. I'll just come. So what is that temperature? What is the dependency on temperature with R? Means R, how R get changes with the temperature. If you'll increase the temperature, what will happen? What will happen? The inside the wire, it will be get heated, right? It means temperature has got increased. We have increased the temperature. तो ये टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है? कोलिजन भी तो बढ़ते होंगे. कोलिजन भी बढ़ते होंगे बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं ना.
बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब टेम्परेचर अचानक से तो बढ़ नहीं जाएगा, कैसे बढ़ेगा टेम्परेचर, कैसे बढ़ेगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे, इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रॉन का जो 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 चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो ऐसे 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 रैंडम मोशन में चल रहे हैं, और जब लेकिन जब कनेक्टेड होते हैं बैटरी से, तो वो क्या कैसे चलने लगते हैं? थोड़े आराम से सीधे सीधे चलने लगते हैं, राइट? थोड़ा थोड़ा बस ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन टकराते तो हैं, दिखाए थे ना तुम लोग को, टकराते तो हैं, राइट? टकराते तो एक दूसरे से टकराएंगे। क्योंकि बताए थे ना कि जितनी तेज जाएगी, हाँ यहाँ पर तो अभी तेज नहीं जाने की बात हो रही है, कि जैसे जैसे जाते जाएंगे वो लोग एक दूसरे से टकराते भी जाएंगे, राइट? राइट, एक दूसरे से टकराते भी जाएंगे, तो कोलिजन भी उतना ज्यादा होगा। इफ कोलिजन ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स नॉट इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, राइट? कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है? ठीक है ना? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अब जैसे कि हम लोग उसमें करते हैं, प्रेस करती होगी ना कपड़ा, राइट? इलेक्ट्रिक आयरन, तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है? हम लोग उसका एक नॉब होता है ना घुमाने वाला, जानती हो ना? नॉब होता है घुमाने वाला, कि इसको कॉटन में करना है कि वूल में करना है कि सिल्क में करना है, कैसा कपड़ा है उसमें, उस एक गोल सा होता है प्रेस में, कि ऐसे करके होता है ना प्रेस। सही से बना तो नहीं पाएंगे। यहाँ पे हैंडल हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे हैंडल हो गया, ये प्रेस हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे नॉब होता है गोल सा, राइट? वूल में जाना है कि कॉटन में जाना है कि सिल्क में जाना है, इस तरीके से। कॉटन सबसे हाई पर होता है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है? कॉटन में करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? वो रेजिस्टेंस हाई कर देता है, राइट? रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो वो क्या होता है? ये वाली जो नीचे वाली चीज होती है, वो हीट ज्यादा हो जाती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन और ज्यादा बढ़ जाता है, कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा रैंडम मूवमेंट होने लगता है, और ज्यादा मूवमेंट होने लगता है तो क्या हो जाता है? ये हीट हो जाता है, ठीक है? तो इससे हम लोग को कॉटन में सबसे हाई रेजिस्टेंस मिल जाता, ठीक है? तो टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि इस टेम्परेचर पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, और तुम्हें रेजिस्टेंस मिला है, you are given resistance, you are given length of the wire, you are given something else, and you have to find out, means one quantity, and if also temperature is given, but you need not to consider the temperature, okay? You need not to consider temperature को भूल जाओ, there is nothing to do with the temperature, because while as long as the temperature will be the same, there will be no change in the resistance, okay? As long as the temperature is the same. So this is what the question you got stuck in here. You were given temperature also, right? You were given temperature, and I'm pretty sure that you must have got confused that why this temperature is given and how to solve this question, right? Yes or no? No, ma'am, the Then temperature remains same, so it will not have any relation with the question, I think. yes. I think there was some calculation mistake. तो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो यू मस्ट ट्राई वन क्वेश्चन, एटलीस्ट आई विल डू इट फॉर यू, बट यू मस्ट फॉर योर practice, I'm telling you that don't give up while doing the question. Never give up. If you are if you got stuck in any question, or you have done any kind of calculation mistake, do it again, right? Do it again. You say I'll just do it question, because calculation mistake is just the mistake of class 7 and 8, right? कैलकुलेशन में मिस्टेक में क्या होगा? इनटू डिवाइड और प्लस माइनस की गड़बड़ी कर सकोगी ना, राइट? यही की गड़बड़ी हो सकती है। तो वो चीज तुम क्या करोगी? तुम्हें एक बार क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दोबारा करो, दोबारा नहीं आ रहा है, तिबार करो, कई बार करो, ठीक है? इससे क्या होगा? तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी, ओके? ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या पता आंसर ही शायद मिस प्रिंट हुआ हो कुछ, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 meter, okay, length is given as 2 meter, is 30 ohm, r is given as 30 ohm. At temperature, nothing to do with that. If the temperature of the wire is 0.6 mm, okay, fine. Diameter, see, diameter is given, okay? You have to solve for radius first, okay? You have to solve it for radius first. So diameter is 0.6 mm. It means radius will be smaller. Radius will be what? 0.3 mm. Yes or no?
Why radius? Why I'm taking radius? Because we need to calculate the area. Area, exactly. We have to calculate the area. Now we are going to calculate the area, but before that we have to convert this millimeter into meter, and for this we have to do 10 power minus 3, right? Meter. राइट ना? सही कर रहे हैं ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? गलत करें तो बताना, हम भी गलत कर सकते हैं आराम से. एरिया इज इक्वल टू, नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर. फर्स्ट पाई आर स्क्वायर ढूंढ लेते हैं और फिर पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पाई आर स्क्वायर को, ठीक है? पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. I think we'll write that as 3 into 10 to the power minus 4. -4 by Because we'll take it as 3.0. -4. Okay. You can take it like 3 into 10 power minus 4 meter. You can also take this, okay? If you have taken this point here, then you have to decrease this power also. Okay, so pi r square. Pi is 3.14. 3.14 into r square means 3 3s are 9 into 10 power minus 8. Okay, स्क्वायर है तो 8 हो जाएगा. ठीक है, इट इज मीटर स्क्वायर. नाउ नीड नॉट टू डू दिस कैलकुलेशन. अभी यहाँ पे छोड़ दो इसको. क्या पता हम उसमें रखें और कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल होने अच्छा है ना, कैंसिल हो जाएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. लेट इट बी. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज what we have to calculate, we have to calculate the rho now. R is equal to rho L by A. Okay, just leave the rho alone so that we can get the formula for rho as rho is equal to आर ए बाई एल. ओके, अभी और भी चीजें हमको बताना है इससे रिलेटेड, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस से अभी और भी चीजें बतानी है. और ये तो एक्स्ट्रा में भी क्वेश्चन पहले बता दे रहे हैं. ओके, रेजिस्टेंस इज गिवन एज हाउ मच? 30 ओम. ओके, 30 ओम. And area is what? 3.14 into 9 into 10 power minus 2, right? Okay, and what else? Rho A by L. L is what? It's 10 to the power minus. Acha, to the power minus. Correct. 10 to the power minus 8. And this length R A by L. L is what? 2 meter. Okay, 2 मीटर. तो चलो करते हैं हम लोग. ऐसा करते हैं, इसको नहीं काटते हैं, इसको काट देते हैं क्योंकि इसमें 0 है ना, 0 हम लोग को काम देगा. तो ऐसा करते हैं, इसको करके 1 पॉइंट, हाउ मच इट विल बी? 57. हाँ, 1.57 आ गया ये 1.57. उसके बाद after this what we have to do, we'll do 1.57 को we can write 1.6, राइट? 30, इसको 3 लिख करके यहाँ पर हम लोग एक 7 कर दे, -7. रुद्र, what do you think? If we'll not write, if we'll can we multiply this 10 of this 30 with the 10 power minus 8? No, ma'am. Why? Can't we do is like this? 10 into 30 into 1 point, let's write this 1.57 as 1.6 into 9 just to make our calculation easy. 10 power minus 8. Can't we multiply these two, this and this? Can't we multiply these two? Why can't we? Why can't we? We can now. We कर can. सकते ना multiply? Yes, ma'am. Yes ना? हाँ, तो 3 into 9 it will be 27. 1.6 into 10 power minus 7. ठीक है ना? अब देखेंगे क्या करना है. फिर हम लोग इसको 8 बना सकते हैं, whatever we wish to. चलो इसको रहने दें. ऐसा करते हैं हम लोग, इसको रहने देते हैं, 10 पावर minus 8 ही रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, 16 कर देते हैं. ठीक है, अब ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है कि नहीं? 27 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 को. 7 6 42, 4 2 6 12, 13 14 15 16 27, 2 13 1 4 32. 432 into 10 power minus 8. तो we can, It was 1.57. क्या चीज 1.57? क्या 1.57? Ma'am, you took it as 1.6, but it was 1.57. That's हाँ, why तो you're हम not उसको getting 1. the same one. तो what I'm getting? Am I getting the same answer? Minus how much it will be? -6 हो जाएगा ना? Am I getting the same answer or not? हाँ, 4.24 और यहाँ पर क्या है? 4.32. It's okay, it's fine. ठीक है ना? थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट मिल जा रहा है because I just rounded it off. हाँ, 1.57 को 1.6 लिख दिए थे. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. तो आ गया ना आंसर? Yeah. ठीक. And what answer you were getting? What answer you were getting, Safia? Ma'am, I got it completely different. You didn't complete it. Ma'am, the answer I got was completely different. Oh, complete. It was completely different. तो थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो गया होगा. चलो कोई नहीं. It's okay. समझ में आ गया ना? Yes, ma'am.
Okay, तो अब हम लोग क्या करेंगे? Mama, actually, I calculated the area from the diameter and I didn't take the radius first. It was just अच्छा, ओके ओके ओके, यू डिडंट टेक द रेडियस। तो इस चीज को कंसिडर करना होगा, देखना होगा कि ये रेडियस दिया है या डायमीटर दिया है। ठीक है, चीज देखना पड़ेगा। ओके, डायमीटर से एरिया मत निकाल देना। ओके, इसीलिए ना गिवन लिखते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। यहाँ से तुम लिखोगी ना डायमीटर इज इक्वल टू 6 mm, तब तुम्हें खुद समझ में आएगा ये तो डायमीटर दिया हुआ है। व्हेन यू विल राइट एवरीथिंग एज गिवन, देन यू विल कम टू नो कि what we have to do next. Okay, what you have to do next. Okay, तो अब बताओ रेजिस्ट ये लेंथ एल लेंथ का वायर है। फाइन, एल लेंथ का वायर है। इसे हम क्या कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है, तोड़ दिए, इसको बना दिए L/2। ओके, तो नाउ टेल मी what will be the resistivity of the material, what will be the resistivity of this wire, new resistivity क्या होगी, what will be the new resistivity if this is the L length, previous length, right, starting length, initial length L है and final length L/2 है, then what will be the resistivity of this wire? resistivity or resistance? Resistivity first, tell me. Resistivity will be same. And what do you think, Rudra? Rudra, tell me what will be the resistivity. Rudra, Yes. what will be the resistivity of the wire if I have cut this wire into half? Tell me, Rudra, are you there? Yes, ma'am. So what will be the resistivity? I'm not sure. You're not sure. Okay. Resistivity of the wire does not depend on any of the factors. It is the property of the material that I already have told in this class also in the starting. Safia has told the correct answer that it will be the same. Okay, it will remain same even if. अच्छा ये बताओ, हमें मेरी आवाज अभी ऐसी है, ठीक है, हम टेढ़े चलने लगेंगे तो क्या मेरी आवाज बदल जाएगी? नहीं ना बदलेगी, वही रहेगी ना। अगर हम बैठ जाएंगे तो मेरी आवाज बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अगर हम चेयर पे खड़े हो जाएंगे तो मेरी आवाज बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। इट विल बी द सेम बिकॉज इट्स द क्वालिटी ऑफ माई वॉइस, इट्स द क्वालिटी ऑफ मी, राइट, ये क्वालिटी है मेरी। हाँ, तो क्या होगा, हम लोग की आवाज, हाँ सॉरी, लेंथ रेजिस्टिविटी, क्योंकि क्वालिटी है ये, प्रॉपर्टी है ये वायर की, प्रॉपर्टी हर एक मटेरियल की, राइट, हर एक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है। हर एक मटेरियल मीन्स तुम प्लास्टिक की भी रेजिस्टिविटी होती है, वो अलग बात है, वो बहुत ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्ट नहीं करता, वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी, लेकिन रेजिस्टिविटी होती है हर एक मटेरियल की अलग अलग, जिसका कि हम इसको टुकड़ा 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 भी कर दें, चूर भी कर दें, तो भी उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चाहे हम इसका एरिया चेंज कर दें, चाहे उसको मोटा कर दें, चाहे उसको पतला कर दें, तो वो इसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इवन इफ द वायर इज दिस मच, इवन इफ द वायर दिस मच, no matter how is the wire. Okay, resistivity will remain the same always. Okay, fine. Now what will be the resistance if in this case, what will be the resistance in this case? The resistance will be 2 times. 2 times. And what do you think, Rudra? For Safia, it's 2 times, means multiply by 2. It means we can say 2R. And what do you think, Rudra? What do you think, Rudra? You're not sure? Yeah. Because you are not sure because you missed the last class, right? Try to attend every class, okay? But now, Safia, Yes. you are wrong here, that it will be 2R. What I told, that resistance is directly proportional to length. If length will get reduced, R will also get reduced. If length is halved, then R will also get halved, right? R is equal to rho L by A. Now, how to solve this question? Samjhi na, Safia? Now, how to solve this question? First, resistance, write as R is equal to R. Okay? Sorry, L is equal to L. Length is equal to L. Length is equal to length. Okay, fine. Length is equal to L. Area is the same throughout. Area is not changing. So, this is the first case. This is the first case. L is equal to L, A is equal to L. So R will be what? Rho L by A. Okay, fine, for a given wire.
because resistivity will be the same. Okay, now in the second case, what's happening here in the second case, L dash, let the new length be L dash. Let the new length be L dash. Okay, ठीक है ना? So L dash will be how much? It has got half, right? It has got halved हो गया. Now A is not getting changed, so A will again, A dash will be A dash will be A. Okay, you need not to even mention it A dash because nothing is given for A dash. ठीक है? Nothing is given for area, so you need not to change. You need not to mention it here A dash. Or if you have mentioned, then it will be not wrong. Okay, A will be A. Or you say, chalo, A dash will be A. Now the new resistance will be a new resistance, means new resistance. New resistance R dash will be how much? Rho L dash by A dash. Now put the values. Put the values. Rho will be the same. R dash, L dash is L by 2. So 2 will be in the denominator. And A dash is the same as A. So 1 by 2 rho L by A. Rho L by A, in the first case we saw that this is that this is as the first equation. R is equal to rho L by A. Can we write in place of rho L by A here as R, so that we can get 1 by 2 R by 2. So new R dash will be how much? The half of that resistance, half of the previous resistance. So you will say that the resistance will get halved. Okay, ठीक है Sophia? Now another case, when the area has got doubled, new area has got doubled, then what will be the resistance? What will be the effect on resistance? Tell me. Just remember the formula. Just recall the formula. What is the formula? What is the formula? And the resistance will become Resistance will become half. Okay. Rudra, अब बताओ तुम. Now you tell me कि how the resistance will get affected if I have doubled the A cross-sectional area. Ma'am, you'll have to use the formula. Hmm. So that's R is equal to Hmm. rho L by A. Yes, exactly. Then Then you put the value for that. let these be new length and area. There is no talk of length, so we will just put the L in place of L dash 2, but in place of A dash, what we'll write? 2A. 2A. So what we'll get as rho L by A is the previous resistance, right? Is the means normal resistance which can be which was in the before when the area was A. Now now the resistance will be how much? 1 by 2 R. R dash will be 1 by 2 R. It means it will be halved. Okay, fine. अच्छा, अगर अगर हम रेडियस को हाफ कर दें, नाउ टेल मी, रेडियस को हम हाफ कर दें, आर डैश को हाफ आर कर दें, हमको पूरा सॉल्व करके बता कैसे. अब हम रेडियस को हाफ कर, बोलो हाउ द रेजिस्टेंस विल गेट अफेक्टेड. इतना मजेदार चैप्टर है ये, जल्दी जल्दी करो, मजे से बताओ. कर रही हो सफिया? yes, ma'am. I'm doing. Okay. And Rudra, doing now? Yes, ma'am, I'm trying. हाँ करो and let me know. Will you change R value to rho L by A? Yes. Will you change R value as rho L by A? R value as Rho L by A. rho L by A. Yeah, it is rho L by A. So over here, can we put that? Now I got the answer. Yeah, what it will be? The resistance will be multiplied by 4. It will be 4 times the original resistance. Okay. And Rudra? No, I'm still doing. Still doing. Okay, do it. You have to put the A formula for area as well. Okay, cross sectional area, that is pi r square. Now I have given you the hint. Well, my answer is not coming right, so I'm not sure. Why you are unable to do? Rudra, it's very easy, no? See, you are getting the initial resistance will be rho L by A. Okay. Now you have got resistance. You have got R dash as R by 2. Okay. So what will be the effect on area? Because it will area will also get affected. Area, how the area will get affect? So pi r square, right? A dash pi r dash square. So how much it will be? R dash, in place of R dash we have to write R by 2 whole square. It will be pi r square by 4. Okay, fine. Up to this,
Up to this, Rudra, fine? Yes, ma'am. Okay, so R dash is equal to rho L by A. Now you can easily replace this A dash with, you can let this L dash be L because L is length is not changing. Length is not getting changed. Okay, rho L by A dash. A dash is what? A dash is what? Pi R square by 4. Okay, so this also here, even here itself you can write it, because pi r square represents area, right? It's a formula of area. So you can write it like a by 4. So you need not to mention it in this here that it will be pi r square. So you just can replace this pi r square by a. Okay, a by 4. This 4 will go in the numerator, and how much it will be? 4 rho L by a. Rho L by a is the initial resistance, which will be 4 R. R dash has got 4 times greater than the previous resistance. Got it? Got it? Yes. Got it now? तो चलो ये बात समझ में आ गई है. कंडक्टिविटी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर तो दैट ये खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे. कंडक्टिविटी देख लेते हैं. कंडक्टिविटी बस क्या होता है? रेजिस्टिविटी की उल्टा. ओके, दिस इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1 by rho, which is represented by mau. What you'll read it? You'll read it mau. Okay. Also means represented by sigma, but you have to, sorry, I'm sorry. Represented by sigma. Okay. And resistivity is represented by sigma, that sorry, resistivity is represented, I'm saying conductivity about resistivity. Resistivity is represented by rho, so conductivity is represented by what? Sigma. Okay, and the SI unit of resistivity is what? Ohm meter. So the conductivity of the material is represented by per ohm per meter. Okay, per ohm per meter. Why? Because sigma is 1 by rho. So 1 by rho, it means 1 by ohm meter. 1 by ohm meter, it means per ohm per meter, right? Per ohm per meter. And to this per ohm को हम लोग क्या कहते हैं? Mao per meter. Mao per meter. Also you can write it per ohm per meter. Are you getting confused? Are you getting confused? And one more thing is there, that you can write to per ohm को हम लोग कहते हैं Siemen. What? Siemen. Okay. Siemen per meter. Siemen per meter. This is Siemen per meter. Okay. देखो क्या 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 है? रेजिस्टिविटी का उल्टा है. ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा है. क्या कहेंगे इसको? कंडक्टिविटी कहेंगे. ठीक है, कंडक्टिविटी कहेंगे. एंड व्हाट एल्स? की रेजिस्टिविटी क्या था? What was the unit of resistivity? It was ohm meter. So what will be the unit of conductivity? It will be per ohm per meter, right? Per ohm per meter. And to per ohm, what we say is mao. What we say? To per ohm, what we say? mao. ठीक है ना? ओम का उल्टा माओ. ओम का उल्टा ओम. देखो क्या है ये? ओम को उल्टा ही ना लिख दिया गया है. ओम का उल्टा. ठीक है, ओम का उल्टा क्या होता है? माओ. इसको बस ऐसे फ्लिप कर दो. MHO OHM MHO. ठीक है, OHM ओम एंड माओ. तो समझ में आया? एंड ऑल्सो टू दिस वी राइट Siemens, which is represented by S. This is represented as not more. This is represented as this. Mao is represented as per ohm. ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या होती है? बस रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है. तो ये क्या हो गया? कुछ क्वेश्चन है. रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इज 2 मीटर is 30 ohm at the temperature. अरे यही तो क्वेश्चन था ना? ये क्वेश्चन था ना? यही तो क्वेश्चन था. ठीक है ना? अगर इसी जगह बोले जाए कंडक्टिविटी निकालनी है, तो जस्ट यू विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 4.24 into 10 power minus 6. 1 upon 4.24 और ऊपर में आ जाएगा 10 power 6. ठीक है ना? 10 power 6 आ जाएगा. समझ रहे हो ना? और 1 upon 4.24 जितना आएगा वो लिख देंगे. 1 upon 4 मान लो 0.25, तो 0.25 के अराउंड कभी आएगा, क्योंकि हम 24 को हटा दिए, तो 1 upon 4 0.25. ठीक है, तो ये आ जाएगी कंडक्टिविटी. ठीक है. सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन मेटल
ये क्या होते हैं कि इनका रेजिस्टेंस का भी कभी ना कुछ मेटल्स का ऐसा होता है, या फिर एलॉय का, एलॉय क्या होते हैं जो कि मेटल के बने होते हैं, ठीक है, काफी मेटल्स को ऐसे कुछ कुछ परसेंटेजेस में मिलाया जाता है जिससे कि एलॉय बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ मेटल और एलॉय ऐसे होते हैं जिनका कि रेजिस्टेंस जो होता है वो ड्रॉप टू जीरो हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो अगर उन्हें क्या किया, ये सफिया? I had a question like this relation between the temperature and the resistance. You said that when temperature increases, the resistance also increases, right? So, ma'am, is it true for all materials? Means which type of materials? Yes, for all metals. Because in chemistry we read that in ionic compounds, when you increase the temperature, then the resistance decreases. In ionic compounds, Yeah, we read something like they do not normally conduct electrolyte. electricity. Are you talking about electrolytes? Some means No, ma'am, I was just asking if that is true for all materials. I'm just talking about the metals, right? Okay. Metals. Okay. Yeah, I'm just talking about the metals. If you'll increase the temperature of metal inside that, then the collision will be more, and then resistivity will get increased. Not the compounds. Okay, not the compounds. Okay. ओके, सर्टेन मेटल क्या होती है, जब हम उसको कूल करते हैं किसी एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर, किसी एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, देन व्हाट हैपेंस इज रेजिस्टेंस बिकम जीरो ऑफ दैट मेटल और एलॉय, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स। इन कंडक्टर्स को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स, क्योंकि ये बहुत तेजी से कंडक्ट करने लगेंगे ना, जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो कंडक्ट तो बहुत तेजी से करेंगे, है ना। तो इनको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स। इन दीज टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, वंस अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू देम, दे परसिस्ट इट इवन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। ये तब तक भी चलते रहते हैं जब इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी होता है, अगर तब भी वो क्या करते हैं, अपने अंदर करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वन सेकेंड, ओके। तो what happens is mercury, lead, these are the metals and all alloys for which the resistance drop down to zero. And when and there is also a condition that when they are cooled below a certain temperature, ठीक है। तो ये क्या होता है, these conductors are called super conductors, and even if the potential difference is not there, they allow the current to flow inside through them, fine, ठीक है। और हाँ, ये जो सब क्या तुम पूछ रही थी, तो ये कुछ ऐसे किसमें होते हैं, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स होता है कि टेम्परेचर अगर तुम इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जस्ट नाउ आई गॉट टू रिमेंबर दिस थिंग। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कुछ कंडीशन पे होते हैं, वो उनका उनका अलग तुम पढ़ोगी जाकर के, जब तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगी, कि वो एक वैलेंस शेल से ऊपर जाते हैं तो वो कंडक्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अब तुमको लास्ट क्लास में भी बताए थे कि चिप्स में लगता है, मोबाइल के जो चिप होते हैं उनमें लगता है, ठीक है। क्या होता है, मेमोरी कार्ड में जो चिप लगा होता है उसमें क्या होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम का लगता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके रेजिस्टेंस, इनके अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, चलो तब डन।